जो रया भरपूरे। होए निमाणी टह पई मिलिया सहज सुपाए। पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय। पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर मैं पाया। सेव करी पल चसा न विछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो। हो कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो। हो कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो। सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोईऐ सबना दा वेशा। सूही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां। नाम बिना सबकू गाली होछियां। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां। नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। नाम निधान अपार भगता मन वसै। जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै। रहाव मोह बाद अहंकार सर पर रुनिया। सुख ना पायन मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया। नरक सुरग अवतार माया धंधिया। सोदत सोदत सोद तत विचारिया। नाम बिना सुख नाहे सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मार मार जन्म ते। बिन बूझै सब बात जोनी भरम ते। जिनको पए दयाल तिन साधु संग पिया। अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लिया। खोजा कोट असंख बहुत अनंत के। जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नाही दाता अपना नाम देओ। गुण गावा दिन रात नानक चाओ हो। विसर नाही दातार अपना नाम देओ। गुण गावा दिन रात नानक चाओ हो।
सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जीओ, प्यार नाल सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह सांझी करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का पवित्र हुक्मनामा सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो अमृत वेले सतगुरां ने बख्शिश किया है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंग 761 ते सुभायमान है। राग सूही जो हिरदे विच भगती भावना पैदा करता है। शब्द का भाव भई असीं उस अकाल पुरख अपने करते नाल जुड़ना है, अपने आप की पहचान करनी है भी साडा जीवन सफल हो जाए। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की पंजवीं जोत साडे हिरदियां नूं वो प्रकाश बख्शिश करते हैं, ज्ञान बख्शिश करते हैं कि जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने, सिमरतियां जो कि गिनती विच 24 ने, वेद 4 वेद ने, पुराण, पुकारन पोथियां, होर भी जिहड़ियां धार्मिक पोथियां वो पुकार पुकार के यह गल कहंदियां। नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। उस परमेश्वर के नाम तो बिना, करते दे नाम तो बिना सारियां गल्लां कूड़ ने, झूठियां। नाम एक वाहिगुरू की करंसी आ जिहड़ी साडी लोक ते परलोक दे विच सहाय हुंदी है। दुनिया तो जदों कूच करके जाना, सिर्फ वाहिगुरू का नाम साडे नाल जाना। उस अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम, उस अकाल पुरख वाहिगुरू का हुक्म, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जीव। हुक्म मनिया होवै परवान तां खसमे का महल पाए सी। खसम का महल तां प्राप्त होना जे असीं उहदे नाम नूं मन्नांगे, उहदे हुक्म नूं मन्नांगे। उस अकाल पुरख के गुण, वो वाहिगुरू का नाम। यह दूजी परिभाषा, दूजी डेफिनेशन। पहला हुक्म, क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरू ने हुक्म तो ही ਉਹਦੇ हुक्म ਦੇ ਵਿੱਚ उस अकाल पुरख वाहिगुरू ਦੇ गुण ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਧਨ ਨੇ, ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ, यह एक धन खटना। असी हमेशा सच बोलना, यदा मतलब असी धन खटते हैं। जो कुछ भी परमात्मा ने सानू बख्शिया, परमात्मा का शुक्र गुजारा करना, वो भी एक नाम का धन है। वाहिगुरू के गुण गाने पे तू सब तो बड़ा, यह भी अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम का धन है। अपने आप नू निमरता दे विच रखना सब तो वड्डा गुण वाहिगुरू दे नाम का धन है। यह चीज़ां साडे नाल अगे जाणियां। महाराज ने सिमरतियां दा, जो कि सिमरतियां वेद ते पुराण दा ते होर पोथियां दा जिक्र किया। भाव सारे धर्मां नूं यह उपदेश दिता भी तुसीं अपने धर्म ग्रंथां नूं पढ़ो ते उहदे च तुहानूं गल समझ आएगी भी नाम तो बिना सब झूठ है। जे कोई अपने आप नूं वड्डा कहाउंदा, इहदा मतलब उस वाहिगुरू की रजा तो उल्ट चलदा। जे कोई कहंदा भी मैं बहुत भला, मेरा धर्म चंगा, मेरा मुल्क चंगा, मेरा धर्म ग्रंथ चंगा, मेरी विद्या चंगी, मेरा जिहड़ा रहबर है वो चंगा, तो महाराज कहते ने वो स्वीकार नहीं हो सकता। उन्हें हाले वाहिगुरू के नाम की प्राप्ति नहीं की। आपस ते जो भला कहावै तिसे भलाई निकट ना आवे।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। हे ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਉ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਛਾ ਪਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਭਗਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਬਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸ਼ਰਾਮ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ। ਭਾਵ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੋ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਈ ਈਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਸਰ ਪਰ ਰੁੰਨਿਆ। ਰੁੰਨਿਆ ਭਾਵ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਸਰ ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੋਹ ਬਾਦ ਮੈਨੇ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ,
उत्थे वाहिगुरू का हुक्म नहीं मन्निया जा सकता। मोह बाद अहंकार, भाई मैं बड़ा बड़ा, मैं चंगा। मैनू तो बहुत अफसोस भी होया, एक नौजवान ते कृपा हुई, उन्हें जाके अमृत संचार दे विच अपना सीस गुरु के अगे भेंट कर दिता भी महाराज अमृत की दात बख्शो। फिर वो जो आया तो दूजे नौजवानों ने पूछा भी अमृत कितों छकिया। उन्हें जवाब दिता भी अमृत ते एक आ, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है। गुरु ग्रंथ साहब तो अमृत छकिया। हाँ तू सानू दस भी जत्था केड़ा सी। उन्होंने जो शब्द वरत्या वास्ते वो मैं साध संगत जी इत्थे तुहाडे नाल साझा नहीं कर सकता। कहंदे वो भी कोई अमृत। हंकार इन्ना बात एक बड़ी अफसोस की गल आ भी जे असीं सिख पंथ खालसा पंथ अमृत नूं अमृत नहीं जान सकता, अकाल तख्त तो केसगढ़ साहब तो जो अमृत महाराज बख्शिश करते हैं उन्होंने अमृत नहीं मनता तो काहदा खालसा होया। अमृत धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 1699 की विसाखी ते केसगढ़ साहब उतों अमृत की दात खालसे नूं बख्शी। जे असीं उस अमृत नूं अमृत नहीं मनते तो फिर किनू अमृत मनांगे। जे गुरु की बाणी नूं असीं अमृत नहीं मनते, गुरु की बाणी नूं नाम नहीं मनते तो किनू नाम मनांगे, किहड़ा नाम है वाहिगुरू का। सो गुरु महाराज कृपा करन। मोह बाद अहंकार पर रुनिया। रुनिया का भाव असीं जिहदा पंजाबी कहने आ बेड़ा गरक, बेड़ा डुबना ही। सुख ना पाया न मूल नाम विचुनिया। इहो जिहे इंसान कभी भी सुख नहीं पाउणगे, थोड़ा जिहा भी, क्योंकि नाम तो विछुनिया भाव विछड़े हुए ने। मेरी मेरी धार बंधन बंधिया, ए मेरी चीज, ए मेरी चीज, बंधना दे विच नरक सुरग अवतार धंधिया, माया दे धंधिया दे विच इन्ने खचत ने। महाराज ने शब्द वरत्या नरक सुरग अवतार, भाव जेड़े चंगे कर्म किए उन्हों का थोड़ा जिहा सुख मानते हैं सुरग, पर उस तो बाद हंकार करके वाद विवाद करके वो नरकां दे विच गर्क हो जाते। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार। तपस्या का कुछ सुख मिलता, वो महाराज ने शब्द वरत्या सुरग, सुरग का सुख। पर अहंकार करके वाद विवाद करके माया दे बंधना करके फिर नरक दे विच धकेलिया जाता। पाप जन्म मरण के गेट तो छुटकारा नहीं होता। सोधत सोधत सोध तत् विचारिया। सोधत मैंने गुरबाणी का विचार किया, यह तत्त की गल समझ आई है। नाम बिना सुख नाए सर पर, भाई नाम तो बिना सर पर पक्के तौर पर तू तो अपने जीवन की बाजी हार के जाएगा। आवे जाए अनेक मर मर जन्म ते। मैं देख रहा भाई ईवन धार्मिक लोग भी नाम की ना होने करके नाम तो विहूणे रह जाते हैं। वो आंदे ने जाते ने जमदे ने मरदे ने। बिन बूझे सब वाद जो जोनी भरम ते, क्योंकि अपने आप को बुझिया नहीं उन्होंने भी मैं कौन हाँ। तो जदों अपने आप को बुझ लैंदा इंसान भाई मेरे पड़ोसी दे विच, मेरे भरा दे विच, मेरे विच भी उही वाहिगुरू है जिहड़ा मेरे हिरदे विच आ। सारा जगत क्यों वाहिगुरू की होंद हर एक कण कण दे विच आ, यह समझ आ जाती। मंदे हन कोडी बदले जन्म गवाया,
ਚੀਨਸ ਨਹੀਂ ਆਪੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਕੋਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਡੀ ਬਦਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਚੀਨਸ ਨਹੀਂ ਆਪੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਨੀ ਜਣੀ ਜਪ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, हे ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਆਪ ਨੇੜਾ ਤਿਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਮਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। Today's Hukamnama is a blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib from Ang 761 in Rag Suhi. Rag Suhi provides the devotion. The sense of the Hukamnama helps us to understand the reality, what is worth dealing in, what is worth accumulating. This life has a limited time. The time span for this life is very limited. It's like football match. For football match, there is a limited time. You have to finish the game in that allocated time. But the team that scores more goals is the winner. Similarly, in this life, we are here to score goal. Now, it's not a new concept. It's way of basically understanding what the real purpose of this life is. Our surat, our focus has to get in the goalpost. Has to get in the goalpost. But there is an opponent team coming in the way. Our goalpost is Vaheguru's Naam, Vaheguru's presence. So Vaheguru's Naam is Vaheguru's presence, Vaheguru's Naam is Vaheguru's Hukam, Vaheguru's will and order. Eko Naam Hukam hai, Nanak Satgur diya bujhaye jiyo. First thing is we have to obey Vaheguru's Hukam. But our mind is distracted by 5 passions. These 5 passions are our opponents. So it's a football match, 5-a-side. You are trying to focus your attention and score the goal. Connect your surat with the Shabad, with the Naam, with the Anahad Naad. But then there is a temptation, calm, coming in the way. Tackles with you, you can't score the goal. Then you try again to score the goal, then your ego comes in the way. Ego tackles and takes the ball away. You can't score the goal. Similarly, anger, attachments, they are all our opponents. So we have to go across, raise our consciousness so high that we are above all these passions and temptations. So our surat can merge with the divine word, Naam of Vaheguru.
That divine word contains Vaheguru's hukam, how everything would function. That divine word has Vaheguru's virtues, what Vaheguru is like. So all of us are traders in this world. We are here to trade, accumulate that wealth of Naam. How do we do it? Every morning we recite, Amul Gun, Amul Vapar, Amul Vapariya, Amul Pandar. We all are Vapari, traders. We are here to trade in Vaheguru's Gun. To simplify, just to test yourself whether you have Vaheguru's Naam or not. You are connected to Vaheguru or not. You can test yourself with the wisdom Guru Maharaj has blessed us with. Simrat Ved Puran Pukaran Pothiyan. Simritis, 24 of them, they are the Hindu books of philosophy. Contain the philosophy of Hinduism. Ved, there are 4 Vedas. Then Puran, again, they are all scriptures belong to Hindu faith. Pukaran Pothiyan, and there are other scriptures, other Pothiyan. What do they say? There is a common thing in all the religious scriptures. Naam bina sab kood gali hochiyan. If you haven't obtained Vaheguru's Naam, if you haven't merged with the Shabad, everything else is kood. Kood means false. Gali hochiyan. Hochiyan means waste of time. All other talks, arguments, they are hochiyan. Waste of time. Guru Maharaj reveals, if you are involved in moho, attachment, you cannot connect your sut with the Shabad. You cannot obtain the Naam. You cannot become one with Vaheguru. Moho Bad, if you are arguing, you haven't got the Naam. You know, a lot of people argue about the Amrit, about the length of the Banis we read. People argue about the scriptures, this is better scripture, that is better scripture. But little do they know, Vaheguru is within them. Scriptures only help you to realize yourself. Without realizing yourself, you have wasted your life. Who are you? You are not what you think. You are image of God. And what you see with your eyes is also image of God. Manifestation of God. ए विश्व संसार तुम देखते ए हर का रूप है, रूप नजरी आया. So why we pick argument with our brother, with our sister, with our friends, with our relatives? If we do, then we haven't got the Naam. So moho bad ahankar, if there is ego, there can't be Naam there. Sarpar runya, sarpar means definitely, runya means ruined. That person will be definitely ruined who is engrossed in the arguments, attachments and the ego. Sukh na payan mool naam vichunya. Such people will never receive peace in their life because they are separated from Naam. Vichunya means separated. Naam is Vaheguru's presence. Meri meri tar bandhan bandya narak surag avatar maya tandya. People are saying this belongs to me. Meri. Bandhan bandya, and they are entangled in the attachment of Maya. Narak surag avatar maya tandya. They get comforts of heaven for a while. But because of their ego, argumentative nature, deceptive nature, they are pushed into the hell. Because they have no compassion in them, no honesty in them. So right in the end, Guru Maharaj reveals, Vaheguru, if you shower your mercy, then only I can get the holy company where I can connect with your Naam. Jinko paye dayal, tin sadhu sang paya. If you become dayal, merciful, then I get the Sad Sangat
then only I can recite your naam. Amrit har ka naam tini jani jap liya. Those people can meditate on your naam, understand the rules of this life, score the goal. Visar nahi datar apna naam deo, gun gawa din raat, nanak chawe. This is the prayer. Forget me, oh my giver Lord. Give me your naam, give me your identity, so that I can sing your praises. Gun gawa din raat, day and night I sing your praises. Nanak chao eho. And this should be my chow, this should be my priority, this should be my passion. So Sat Sangat ji, keep in chaddi kala, pyar na fateh saji karni, keep people around you happier, and you will become more happier. When you give to people, you receive it back fourfolds. Uste chogan kare nihal, Nanak Sahib sada dayal. May Vaheguru bless you all. प्यार ना फतेह सांझी करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।